Good evening, I'm Swastika Panda from OdishaTV.in, bringing you today's news from Odisha. First, the headlines. Banajaga team identifies Daru of Lord Sudarshan at Gadakuntraniya village near Balakathi. Cops tighten security at the spot to safeguard the holy tree. 3 women die after cesarean section delivery at VSS Medical College and Hospital. Doctors suspect death due to medicine side effect. Senior IAS officer Tara Datta visits cut-off areas of Malkangiri district to review Guru Priya Bridge project. Air Odisha gears up to start operation from Biju Patnaik Airport ahead of Nabha Caliber. And inter-district gold fraud racket busted by Commissionerate Police. 5 members of the gang arrested, ₹20 lakh and fake gold biscuits seized. Now let's start with the big news of the day. After a week-long journey in search of Daru for Nabha Caliber, the Banajaga Jatra team ultimately identified the holy word for Lord Sudarshan at Gadakuntraniya village near Balakathi on the outskirts of Bhubaneswar last night. It was informed by Chief Administrator of Sri Jagannath Temple Administration Suresh Mahapatra after being apprised by the leader of Banajaga Jatra team. A large number of people started thronging the place to get a glimpse of the holy tree this morning after the announcement was made. A 7-member team including President and Secretary of Daitapati Nijog, senior members of Banajaga Jatra team and Bodagrahis of Holy Trinity held discussion last night and unanimously selected the vote for Sudarshan from the shortlisted neem trees. On the other hand, other members of Banajaga Jatra team staying at Deoli Math have left for the Daru spot to conduct rituals before cutting down the tree. Meanwhile, SJTA Chief Administrator Suresh Mahapatra and Police Commissioner Rajendra Prasad Sharma along with other top officials reached the spot. Police have made all arrangements for the security of the tree. इठी दारू गछ चिन्हट कराई सुदर्शन कर गतकाली लेट नाइट आमको इनफॉरमेशन आसला एवं भोर आम आसिक पुरी एसपी आईजी पुलिस कमिश्नर समस्ते आसिक आम ताको इमिडिएटली प्रोटेक्शन पाई जहाँ दरकार लुहा बैरिकेड सब आनिक आसचु एवं पुलिस फोर्स अच्छा आम चेष्टा करूँ ताको जमती कई डैमेज करेंगे आ जनरल पब्लिक जमती लार्ज स्केल आसले जमती दूर दारू गछ देखिपारे से सब अरेंजमेंट कराऊँ एबे दैतापति मैंने आसले गछ चारिपटे कौटी यज्ञ हम एवं कौन कौन अरेंजमेंट करा से विषय डिटेल आम डिस्कसन करूँ से माने 14 तारिख दिन ये शिफ्ट करेंगे 14 तारिख ऊपर बेला से आसवे और 15 तारिख दिन ठू आम यज्ञर जो अंकुरार्पण और अन्य काम स्टार्ट करने प्रपोजल अच्छी तापर 2 दिन कंटिन्यूअसली यज्ञ हम यज्ञ है दारू छेदन करा तापर सगड़ी ऑलरेडी बर एवं तेंतुली गछ आम अरेंज करचु जो खपुरिया जो समिल अच्छी गवर्नमेंट ओएफडीसी सेठी काटिकी साइज करके आनिकी आसेम्बल कराब एवं मु भावुची प्राय 19 तारिख आड़ को दारू छेदन है सगड़ी पूरी अभिमुखे बाहर 19-20 तारिख आड़ जे सुदर्शन दारू आमर कमिशनरेट एरिया चिन्हट एठी आमर शांति श्रृंखला सहित करने आईन श्रृंखला मेंटेन करने सफिशिएंट पुलिस अरेंजमेंट वर्तमान करा जाउछि ऑलरेडी इनफैक्ट आज सकाळ पुलिस डिप्लॉयमेंट आरंभ हो जाइछि अवश्य एथिरे वर्तमान आमे सबू रेकी और सर्वे करी देखिलु जे को जगह बैरिकेडिंग करिबार अछि यज्ञ को जगह होबो रहबा व्यवस्था कोठी से मनन को होबो और ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था की भाव में ट्रैफिक डाइवर्जन होबो और जो राउंड दी क्लॉक पुलिस फोर्स मुतयन होबो जो कि प्राय 7-8 दिन पर्यंत दरकार पड़ो से पुलिस को रहिबा पई एठी को प्रकार व्यवस्था करा जीवो ये सब आम एबे आज सकाळे सब ठीक करिछु एबे बहुत शीघ्र एठी बैरिकेडिंग काम ग्राउंड लेवलिंग रो काम एटा आरंभ होबाक जाउछि ऑलरेडी लोकल लोकनो भीड़ आरंभ हो जाइछि से आमर जो कैलकुलेशन अच्छी प्राय 24 प्लाटून्स पाखापाखि फोर्स दरकार पड़ो फोर्स मोबिलाइज करा जाउछि ऑफिसर्स मध्य भुवनेश्वर यूपीडी छड़ा कटक यूपीडी रू मध्य मोबिलाइज करा जाउछि सो दैट राउंड द क्लॉक आम सफिशिएंट व्यवस्था करिबो पुलिस व्यवस्था सहित जो अन्य डिपार्टमेंट रो जो कोऑपरेशन जो कि सिक्योरिटी रे बियरिंग होउछि लाइटिंग व्यवस्था ठीक करा जाउछि वर्तमान सेसु द्वारा
R&B डिपार्टमेंट रो ऑफिसर्स माने आसीछंती तांकर सहित आलोचना हेगरी बैरिकेडिंग की परि भाव रे होबो को डिजाइन होबो सेटा ऑलरेडी डिसाइड करा जाय छी एंड PhD रो पानी रो व्यवस्था मध्ये जो लोक एठी आसीबे भुवनेश्वर रु अन्य पाखापाखी अंचल रु तांको पई करा जाउ छी हमर गोटे पुलिस कंट्रोल रूम मेठी करा जीवो पंचायत घर गोटे अच्छी और गोटे साइक्लोन शेल्टर गुड़ा पाखे अच्छी से मध्य पुलिस रहा व्यवस्था करा जाउछि एंड एठी राउंड द क्लॉक पुलिस कंट्रोल रूम रू सब मॉनिटर करा जीवो 15 तारिख ठू आम यज्ञ ये आरंभ हम से भितर जो आम टाइम टा देचु जो टाइम भितर ये आरेंजमेंट ररेंजमेंट ना आम आसवाटा संभव हो पारनि सो जहाँ जहाँ दरकार से आरेंजमेंट कराऊँ 14 तारिख ठू आम 15 तारिख सकाल समस्त कार्य दारू छेदन यज्ञ पर 2 दिन आम जो ये निर्जल उपवास रहा पर ये यज्ञ हम जो यज्ञ महायज्ञ ये यज्ञ मात्र नवकलबल समय हुए से यज्ञ आप देखिपारे से जो यज्ञ हो यज्ञ हवा पर गछ न पड़ा पर्यंत आम दयितापति माने सभापति हिसाब से कौन मत आम छेप ढोकी पारूनी जिते पर्यंत गछ पड़ो तापर पूजा है बाहर In a shocking incident, 3 women died after 5 hours of delivering babies through cesarean section at VSS Medical College and Hospital at Burla in Sambalpur district yesterday. Although the exact reason of deaths has not been yet ascertained, doctors suspected side effects of medicine might cost dear for the lives of the women. The victims were identified as Kalpana Mahakund of Kanchi Bahal in Bargarh, Sulochna Pradhan of Belpahad in Jharsuguda and Kasturi Seth of Bhedin in Bargarh districts. Hospital sources said 9 pregnant women underwent surgery to deliver baby, out of which 6 are safe. Assistant Professor of Obstetric and Gynecology Department Lal Mohan Naik, who conducted the operation, said the condition of the woman was good after the operation but deteriorated after consuming medicine. Meanwhile, DMET visited the spot on the order of Health Minister Atanu Sabyasachi Naik and examined the medicines. काली आमर 9टा केस ऑपरेशन होता भितर 3 जनकर डेथ हो गला ये जो डेथटा है आम ऑब्जर्व करुचे जस्ट ऑपरेशन रो 5 घंटा पर 3 जनकर डेथ होती आउ सिमिलर टाइप ऑफ सिम्पटम रे तांकर होती तेणुकर आम भावुँ आज गोटे किसी गोटे ड्रग रिएक्शन होती कि कौन गोटे असुविधा होती आम सस्पेक्ट करूँ जो मैंने ऑपरेशन कर एक्सपर्ट सर्जन सर्जिकल प्रोब्लेम किसी ना कारण से लेबर रूम रे रोते लेबर रूम रे जोटि आम 24 घंटा से डाक्तर था तेणु डाक्तर साइड रू अवहेला होगी मुझे कहबी ना कारण आम बर्तमान अनुधान करा भी जे मेडिसिन किसी असुविधा भी नथी आम कहीपरूँ से मेडिसिन गुड़ाक जोटा दिखाई से रखाई आम टेस्ट करवा आम गोटे मेडिसिन टेस्टिंग सेंटर गोटे अच्छे फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट रे तेणु सेटा टेस्ट पई पठा होची. With the approval of the President, 3 new additional judges have been appointed in Odisha High Court yesterday. Krishna Ram Mahapatra, Jatindra Prasad Das and Durga Prasad Chaudhary have been given the prestigious post, a notification issued by the High Court Registry late last night said. Das is working as Registrar General in Odisha High Court, while Chaudhary is the Khurda District and Sessions Judge. Mahapatra is a senior lawyer in High Court Bar Association. With the appointment of 3 new judges, total number of judges reached 21. 4 years after the abduction of R. Vinil Krishna, another top IAS officer, Tara Datta, yesterday visited the cut-off areas near Chitrakonda of Malkangiri district to review the much-awaited Guru Priya Bridge. Datta, who is the additional Chief Secretary and KVK Commissioner, was accompanied by Malkangiri Collector V. Prasad Reddy. They first reached Badapada Panchayat and interacted with the local people. Spending at least 1 hour there, he visited the much-awaited under-construction Guru Priya Bridge connecting Janabai to Badapada. The top officer reviewed the primary works of the 910-meter long bridge. Later, he visited a BSF camp set up there and discussed with the Jawans about the safety and security of the construction work. Notably, after the then Malkangiri collector R. Vinil Krishna was abducted by Maoists in 2011, no IAS officer dared to visit the red zone in the district since that time. A good news for the visitors. Air Odisha is gearing up to start operation for the Navakalebar by the end of May. The company has already opened its counter at Biju Patnaik Airport and 9-seated mini flights have already parked there. The regional flyer will connect to Konark, Rourkela, Jaipur and Jharsuguda from the state capital after getting go-ahead from Directorate General of Civil Aviation (DGCA).
Meanwhile, a mock drill was conducted yesterday at Biju Patnaik Airport in Bhubaneswar ahead of the Nabakalevar festival. Mock exercise of the doctors, fire brigade, NDRF and CISF rescuing and treating visitors and air officials were conducted at core area of the airport. अगर कोई गॉड फॉरबिड कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इमरजेंसी क्रैश हो जाता है, तो हम लोग चेक करते हैं कि रिस्पांस टाइम कितना है. हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और हम लोग अपनी प्रिपेयर्डनेस को चेक कर रहे हैं. At least 7 people were killed and 5 others injured as lightning struck in different parts of the state yesterday. Two brothers, Ramesh Pradhan and his cousin Paresh, along with their friends, were playing cricket at Maharajpur under Khantapada police limits when lightning struck them. Both of them died on the spot, while 4 others sustained serious injuries. Similarly, 3 persons in Jajpur and 2 others in Khurda districts were also killed in similar mishaps. Pointing fingers at BJD leaders AU Singhdeo and Pushpendra Singhdeo, leader of opposition Narsingh Mishra, yesterday alleged that the leaders of the ruling party are involved in a chit fund fraud involving a company called Vista. Without taking any names, Mishra apparently took a dig at Rajya Sabha MP AU Singhdeo and Housing and Urban Development Minister Pushpendra Singhdeo at a press conference. While showing photographs of Pushpendra and Ananguday with Vista office bearers to media persons, Narsingh added the company is still functioning in Kantabanji and it has duped people of rupees 40 crore. विस्टा नामधेय एक चिटफंड कंपनी वर्तमान सुधा लोक ठकी चली एवं से ठकई रे जहाँ फोटोचित्र प्रमाण मिलूँ किसी राजनेता संपृक्त अच्छा. कलाहांडी जिलार वर्तमान जड़े मंत्री एवं बलांगीर जिलार जड़े पूर्वतन मंत्री जे कि वर्तमान एमपी अच्छा तांको मध्य से फोटोचित्र देखा मिलूँ जो घोर संदेह जात होची संपृक्ति यही ठकई रे तांको विरुद्ध रे मु दाबी करुची अतिशीघ्र अनुसंधान करा जाऊ एवं प्रमाण संग्रह करी दंडित करा जाऊ. आमे पब्लिक लोक अनेक पब्लिक फंक्शन को जाऊँ अनेक लोग आम सांगे ठिया कर फोटो नौ तार अर्थ किसी नहीं. वी आर नॉट इन्वॉल्व इन द धंदा और एनी सच बिजनेस. ये सबू मिथ्या प्रचार अच्छे जानी आप जे नवीन पट्टनायक इज हाईली सक्सेसफुल. बीजेडी सब म्युनिसिपालिटी जीती एनएसी जीती. इथर लास्ट टाइम से 27 एमएलए आसिले इथर 16 एमएलए आसिले. मु भावुची कांग्रेस इज हाईली फ्रस्ट्रेटेड जे नेता ये स्टेटमेंट दौरान तांकर फ्रस्ट्रेशन अति सीमा को पार कर जाइए. गोटे बार्धक्यर प्रलाप से करुछंती. बीजेडी रो सक्सेस तांकर मानसिक संतुलन टिके बिगड़े देछि. टोटली पॉलिटिकल आज्ञा तारे अच्छी कौन टोटली पॉलिटिकल उद्देश्य करुछंती. फ्रस्ट्रेट हेई चांती किए कोठी सभा समिति रे किबा कोनोसी फंक्शन रे डाकिले आमे सेठरे जाऊ अटेंड करू ता माने नुहे जे आमे कोनोसी संस्था सहित संपृक्त अछु. अवांतर एवं गोटे वाइल्ड एलिगेशन करूछंती तांकोठो अंततपक्षे एवली आशा करू नथली. The Commissionerate Police yesterday busted an inter-district gold fraud racket, arresting 5 members of the gang. Police seized rupees 20 lakh cash, fake gold biscuits and 2 luxury cars from the accused after conducting raids at many hideouts in the city. They used to sell fake gold to people, posing themselves as custom officials, police said. The racketeers have swindled more than rupees 42 lakh by selling duplicate gold to gullible customers, they added. The gang members used to make the deal by showing original gold, and once the deal was done, they used to flee after taking advance from businessmen, the police added. As the strike by traders demanding exemption of VAT on pulses and wheat products entered the third day, Odisha government yesterday turned down the proposal of introducing 1% entry tax in lieu of 5% value-added tax VAT. Since the matter of imposition of entry tax on agricultural products was pending before the Supreme Court, it was not possible to fulfill the traders' demand, Finance Minister Pradeep Amad said. The Federation of All Odisha Traders Association (FAOTA) has submitted a representation for exemption of 5% VAT on pulses and wheat products and levy of 1% entry tax thereon. It has been 1 year since Odisha voted for first phase of general election on April 10th last year.
People of the state gave their mandate in favor of Biju Janata Dal (BJD) during the polls, and Navin Patnaik became the Chief Minister of Orissa for the 4th term. In the Kandhamal by-election, also which was held few months after the assembly polls, BJD candidate Pratyusha Rajeshwari Singh performed well and defeated BJP's Rudra Madhav Ray by 3 lakh votes. Similarly, in the recently concluded civic polls in 8 urban local bodies (ULBs), BJD trounced opposition parties. Looking at this, question arises whether BJD has become more powerful in the state or the popularity of opposition party is just waning. Let's hear what people from different parts of the state have to say. प्रकृत में ओडिशा रे अल्टरनेटिव नाइन न बोलिक नवीन के योग्य भाववाले लोक बाध्य होचन। आपण देखुछन कोयला दुर्नीतिर कथा कहून किंबा आपणकर चिटफंड दुर्नीति मामलार कथा कहून इन ना विरोधी दल ताके ठेका करे हाईलाइट करि पारुछन, ना कांग्रेस ताके हाईलाइट करि पारुछे, ना बीजेपी ताके हाईलाइट करि पारुछे। तीनटा जाक दल रे आखिदुसिया परिवर्तन किछि हेइ नै। मते लागुची जे इलेक्शन पूर्व जहाँ स्थिति थिला बर्तमान मध्य सेही भलिया ही स्थिति अछि, ताबे विशेष किछि परिवर्तन हेइ। विरोधी दलंकर कौन सी सत्ता ओडिशा रे ए पर्यंत नहीं, जेहेतु सुसंगठित नुहे तांका निज निज भितर कଳି कजिया करछन। Before wrapping up, the headlines once again. Banajaga team identifies Daru of Lord Sudarshan at Gadakuntaniya village near Balakathi. Cops tighten security at the spot to safeguard the holy tree. 3 women die after cesarean section delivery at VSS Medical College and Hospital. Doctors suspect death due to medicine side effect. Senior IAS officer Tara Datta visits cut-off areas of Malkangiri district to review Guru Priya Bridge project. Air Odisha gears up to start operation from Biju Patnaik Airport ahead of Nabakalibar. And inter-district gold fraud racket busted by Commissionerate Police. 5 members of the gang arrested, ₹20 lakh and fake gold biscuits seized. Thank you for watching. Good night.